Assalamu alaikum guys. Today we're going to start our first program in HTML. आज हम जो है फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे HTML में। जो भी न्यू लर्नर्स हैं सो इस वीडियो को गौर से देखें। It will be quite necessary and helpful for them. So let's start. Doc type HTML। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर HTML दोबारा लिखेंगे, then body। Is it clear? देन हम टाइटल देंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं टाइटल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम टाइटल है, इसको हम क्लोज करेंगे स्लैश टाइटल के साथ। देन व्हाट्स नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज हेडिंग। Okay. The entire program that we are going to do right now, that is in elements. Element defines whole HTML documents. Okay. So इसमें हम headings and paragraphs को जो है उसके ऊपर काम करेंगे। For example, heading 1 hello world हम लिखते हैं यहाँ पर। इसको भी हम क्लोज करेंगे। This is heading and now this is paragraph. Welcome to our program को भी हम क्लोज करेंगे। Have to close it. Okay, now our program is going to be ready. Here we will have to write down body and here HTML. Now our program is ready to run. अब हम इसको रन करके देखेंगे। उससे पहले हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपकी जो फाइल है उसमें .html लाजमी आपने एंड में लगाना। ये HTML का एक्सटेंशन है। All coding, all languages have got the extensions. Like if you talk about Java, Python, .py, so every language has got the extension. So here program, or we write here hello world .html. I'm going to save this file in D folder. Save it. Now let's check. Hello world. अब ये हमारी फाइल है, so it has been saved with the name hello world, the name that we typed. So now we're going to open it and we will check it out that whether it's ready to run or not. Now click on it. So look at the screen guys, our first program has been ready. Hello world, welcome to our program. So now like this you can create thousands of the programs. One more thing I would like to tell you furthermore here, and the thing is that it's not necessary that you need to just put one heading. आप एक से ज्यादा headings जो है ना वो input कर सकते हैं। या यहाँ देखें, आप heading 2 लगाएं, where are you, इसको आप close करें, heading 2, heading 3 लगाएं। Means you can have more headings, you can give more headings. Heading 3 hi. So I'm going to close it. Heading 3. Let's have heading 4. Who are you? Close it. Okay guys, so now let's save it and let's check it out. Save. Check.
So now look at the screen. Hello world, where are you? Hi, who are you? So as you have seen that we have given 4 headings, and 4 of the headings are over the screen. You can see hello, where are you? Hi, who are you? So actually, I wanted to tell you that we can give more headings, more than 1 headings. हम एक से ज़्यादा headings को यूज कर सकते हैं. So अगर let's suppose हम पैराग्राफ को रिमूव भी करें, let's suppose I'm going to remove. अब देखें, इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं. अगर हम पैराग्राफ को निकाल भी दें एलिमेंट में से, फिर भी हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करेगा. इट विल बी सेव्ड. अंडरस्टैंड. अगर हम लेट्स सपोज हेडिंग को रिमूव करें, सो लेट्स सी क्या हमारा प्रोग्राम काम करता है अगर हम सिर्फ पैराग्राफ का यूज करें. सेव, रिफ्रेश, वेलकम टू आवर प्रोग्राम. इट मीन्स दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने हेडिंग और पैराग्राफ दोनों को एक साथ यूज करना है. इट्स नॉट नेसेसरी. अगर आप जस्ट हेडिंग देना चाहते हैं, यू कैन जस्ट गिव हेडिंग. अगर आप जस्ट पैराग्राफ देना चाहते हैं, यू कैन जस्ट वर्क ओवर द पैराग्राफ. अब यहाँ पर देखें, जो वेलकम टू आवर प्रोग्राम है, इसकी साइज बहुत ही कम है, स्मॉल है. So in the next videos, I'm going to teach you, or I'm going to tell you that इसकी जो टेक्स्ट साइज है, फॉन्ट साइज है, और जो फॉन्ट का कलर है, वो हम कैसे चेंज करेंगे, उसकी साइज कैसे इंक्रीज करेंगे, आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियोस. और उसके अलावा अगर आप पैराग्राफ भी ज़्यादा देना चाहते हैं, सो मोर देन 1 or 2 यू कैन गिव. सो लेट्स सपोज दिस इज or site. So now close the paragraph. Again, I'm going to type paragraph. Hello world. So I'm going to save it, and now let's check it out whether it works or not. I have saved. Now refresh the page. So look at the page now. Welcome to our program. This is our site. Hello world. So it is all about HTML elements. So today I have taught you about headings, paragraphs, and basic, coding of HTML. आज हमने एक basic program किया है HTML का. Now we will do further more programs in it. And I hope that you have understood it, and now you can try it on your computer. Okay, guys. So thank you. Inshallah, see you in the next video very soon.